Assalamu alaikum students, I hope all of you are doing well. In the previous lectures we have discussed about the steps which are involved in solving a biological problem. Today we are going to have a overview about the history regarding a study of malaria, which is an example of biological method. Study of malaria, an example of biological method. Okay, so if we consider an example of biological problem we are facing in these days, look around yourself, it is corona. So it is a biological problem we are facing these days. So scientists which have diagnosed it and presented or discovered the vaccine for its cure, they have also gone through the all the steps we have discussed in biological method. So today we are going to discuss about study of malaria. It is also discovered in ancient time, so all the procedure we are having in these days for corona, they are doing those steps in the ancient time. So study of malaria, an example of biological method. We know that malaria is a common disease in many countries including Pakistan. So why the monkey is hanging here? Because this disease was first discovered in monkey. जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी मलेरिया, डिस्कवर हुआ था वो हुआ था monkey में. So the mosquito which is responsible for the transmission of malaria is Aedes anopheles, which is also known as a vector. वेक्टर क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि वेक्टर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई एक चीज़ कैरी करके दूसरे में ट्रांसमिट करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस जब मॉस्किटो ने मंकी को बाइट किया, द मॉस्किटो विच हैविंग मलेरिया, वो मॉस्किटो जिसको मलेरिया हुआ था उसको जब बाइट किया और फिर ह्यूमन को बाइट किया तो उसने ट्रांसमिट कर दी वो डिजीज़ फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन. नाउ in the upcoming lecture we will discuss about two examples, two full procedure of biological मेथड कि कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की गई. उसमें दो प्रॉब्लम्स हमारे पास, एक है कॉज और दूसरा है ट्रांसमिशन. कि what was the cause of malaria and second was how the malaria was transmitted. But today we are going to discuss about history. Ancient time. Ancient time, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They considered it a disease of chills and fever with reoccurring attacks. ये वो सोचते थे कि it is a disease of fever which reoccurs with chills and reoccurring. It is occur with chills and fever. So there were certain general observations जो उस टाइम उन डॉक्टर्स ने की थी, which was disease was more common among people living in low marshy areas. It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air people got malaria. This belief led to the name of this disease. अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये की थी कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं या जहाँ की द एरिया विच हैव पोल्यूटेंट एयर और विच इज़ नॉट क्लीन्ड, तो वहाँ पर जो है बैड एयर होती है, दैट्स वाई वहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है. ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जिससे उन्होंने उसका नेम भी डिराइव किया, विच इज़ डिराइव फ्रॉम एन इटालियन वर्ड मला फॉर बैड, एरिया फ्रॉम एयर, बैड एयर. यानी जो बैड एरिया या मार्शी एरियाज के पीपल थे दे गोट मलेरिया फ्रिक्वेंटली. So these were the major or we can say general observation. For further clarification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ volunteers ने stagnant water drink किया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ. Now medicine for treating malaria. Okay, now medicine for treating malaria. In 17th century when the world America was discovered, so there were some plants जिनको अमेरिका से उन्होंने यूरोप वापस भेजा था for medicines, for the purpose of making medicines.
Medicine for treating malaria. The bark of a tree known as Cuna cuna was very suitable for curing fevers. It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. अब एक bark थी एक tree की which was known as Cuna cuna. उसकी bark से ये लोग treat करते थे for the it was the cure for मलेरिया. बट द बार्क वॉज नॉट इनफ कि इतनी सारी यूरोप में उसकी एक ट्री की बार्क लाना वॉज नॉट इनफ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स थे और बार्क जो थी वो कम पड़ रही थी. तो फिर क्या हुआ, some dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, Cinchona, which closely resembled Cuna cuna. The dishonestly proved much valuable for mankind. Cinchona bark was found to be excellent for treating malaria. अब एक मर्चेंट था जिसने क्या किया था, कुछ मर्चेंट थे जिन्होंने क्या किया था, सिनकोना विच वॉज रियली रिजेंबलिंग टू द क्यूना क्यूना प्लांट. आप यहाँ देख सकते हो क्यूना क्यूना प्लांट्स के जो फ्लावर्स भी हैं उससे भी बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है सिनकोना. तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो रिजेंबल करता है तो उन्होंने एक तरह से जो थे डिसऑनेस्टी दिखाई और वो जो थे सेंड कर दिया टू द यूरोप. लेकिन उनकी डिसऑनेस्टी भी जो थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आई क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव थी एज़ कम्पेयर टू क्यूना क्यूना. ठीक है, सिनकोना उससे. Now Cinchona, we now know the reason Cinchona bark contains quinine. Okay, we now know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease. At that time, physician treated malaria with Cinchona without understanding the cause of malaria. वो जो टाइम था ना वहाँ पर फिजिशियन जो थे उन्होंने सिनकोना से उसका इलाज किया क्योंकि इट वाज रियली इफेक्टिव फॉर देम, लेकिन उनको रीज़न नहीं पता थी कि क्यों क्या कॉज है मलेरिया का. बस एक प्लांट था जिसकी बाग से उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जो थे रिजल्ट मिले कि इससे बहुत ज़्यादा क्योर हो रहे हैं अच्छे से पेशेंट, तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया. एंड अब हमें रीज़न पता है कि क्योंकि क्यूनाइन प्रेजेंट थी उसमें तो इस वजह से वो ज़्यादा अफेक्टिव था. Cause of malaria biological problem. 200 years later it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. After this discovery it was become a belief that malaria too might be caused by some microorganism. अच्छा 200 years later उनको ये पता चला ये बात कि जो मलेरिया की डिजीज़ है हमारे पास इट इज़ या देयर वर सर्टेन डिजीज़ एट दैट टाइम दैट वर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिजीज़. तो उन्होंने ये फाउंड करना शुरू किया कि इज़ इट ट्रू कि मलेरिया जो है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रहा है. तो in 1878, a French army physician Leverin began to search for the cause of malaria. He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope. He noticed some tiny creatures. अब इसने भी जो थे वो कुछ tiny creatures observe किए which is here in the picture. अगर आप picture को सही से observe करो तो you can see there are some tiny or microorganism you can clearly seen in these slides which are the real slides from the microscopic view. His discovery was not believed by other scientists. 2 years later, other physicians saw the same creature in the blood of another malarial patient. 3 years later, after the second discovery, the same creature were observed for the third time. अब यानी third time भी वो चीज़ prove हो रही है. The organism was given a name Plasmodium. अब जब वो third time prove हो गई और सबने उसको accept कर लिया तो the microorganism was given the name Plasmodium. So this was the history how the microorganisms was discovered या how the Okay, so this was the history regarding malaria, how it was discovered and how the scientists proved that the Plasmodium is the cause of malaria. Okay, in the next lecture, in the upcoming lecture, we will discuss about the detail of the steps which are included in discovering this cause. Thank you.